Committee. The Monetary Policy Committee met on, and this time, as you would be aware, this time we have 3 new external members in the MPC. The Monetary Policy Committee with 3 new external members met on 7th, 8th and 9th October. And after assessing the evolving macroeconomic and financial conditions, सर रेट कट पे सी लेना है वही ना, रेट कट होगा तो सी the MPC decided majority of 5 out of 6 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, remains unchanged at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they stand at 6.75%. Further, the MPC decided unanimously to change the stance, that is the stance of the monetary policy, to neutral, and also decided to, let me read it again. The MPC decided unanimously to change the stance to neutral and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. The MPC noted that currently the macroeconomic parameters of inflation and growth are well balanced. Headline inflation is on a downward trajectory, though its pace has been slow and uneven. Going forward, the moderation in headline inflation is expected to reverse in September and likely to remain elevated in the near term due to adverse base effects, among other factors. Food inflation pressures could see some easing later in the financial year on the back of strong Kharif sowing, adequate buffer stocks, and good soil moisture conditions, which are conducive for Rabi sowing. Adverse weather events continue to pose contingent risks to food inflation. Core inflation, on the other hand, appears to have bottomed out. Fuel component of the CPI रेपो रेट अनचेंज है, स्टांस न्यूट्रल है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वाले हैं भाई, ठीक है। अभी 25,000 का जो कॉल दिख रहा है ना आपको निफ्टी में, ये दिख रहा है 165 वगैरह के आसपास, ठीक है। देखो मैंने बोला था यहाँ से एक बार नीचे जाने के बाद में अगर वापस इसको क्रॉस करेगा तो अपना भाई प्लान क्या है भाई, हमारा प्लान है कि ये बिल्कुल टच करना चाहिए 140 वगैरह वाले लेवल को। डेफिनेट बात है आरबीआई की मीटिंग के दौरान थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, पर 25,000 का कॉल ना 170 वगैरह के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है ना तो वहां से भाई है ना 170 नहीं 172 वगैरह के ऊपर, तो वहां से एक भाई अपसाइड के लिए अपन देखने वाले हैं। क्रॉस कर गया है भाई 170 के ऊपर, यहाँ पे ध्यान रखना 25,000 के कॉल में, और 51,000 का कॉल अभी थोड़ा सा सस्ता चल रहा है। 25,000 का कॉल वहां से 180, while of course 179.95 चल रहा है। 25,000 के कॉल में फिर से एक स्कैल्प तुमको मिल गया होगा यहाँ पे अपसाइड में, ज्यादा नहीं 10 पॉइंट का एक स्कैल्प। और आरबीआई के भाई ये जब तक मीटिंग चलेगी तब तक थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहती है, ध्यान रखिएगा। 183 184 बढ़िया। बैंक निफ्टी के प्रीमियम नहीं बढ़े यार। फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी and elevated public debt continue to play out. 300 भी नहीं पहुंचे हैं भाई, 343 कैसे पहुंच गए? While services activity is holding up, world trade is exhibiting 172 187 172 वगैरह से 187 चला गया, बहुत बढ़िया। 25,000 का कॉल में बढ़िया मोमेंटम। divergence in 186 dynamics across ये बढ़िया है गुरु। has resulted in यार बैंक निफ्टी में भी यहाँ से बस प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं भाई, है ना, अपना इरादा तो था कि यार यहाँ से ऊपर की तरफ अच्छा देखने को मिलना चाहिए। 190 140 वाले लेवल पे आ चुका है निफ्टी, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट था उसको टच करते हुए। बैंक निफ्टी में भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा 200 170 से 200 वाला लेवल इन्वेस्टमेंट। चलो बैंक निफ्टी में भी एक एग्जीक्यूशन हुआ है भाई अपने ऑर्डर का, हाईएस्ट लेवल 360 वहां से सीधा 12-13। प्रीमियम थोड़े स्लो रहे भाई ना बैंक निफ्टी के भाई, और निफ्टी के भाई बहुत ही जबरदस्त। सप्लाई साइड ग्रॉस वैल्यू एडेड, दैट इज जीवीए, एक्सपेंडेड बाय 6.8%, निफ्टी में भाई मजे आ गए।
aided by strong industrial and बैंक निफ्टी services थोड़ा सा मजा sector और दे दे यार, activities. 360 बस गए, 207 और High-frequency निफ्टी indicators निफ्टी available भाई so far तगड़ा, suggest that domestic economic और बैंक activity निफ्टी भी अच्छा चल रहा है continues to be steady. The main components from 390 the supply भाई, side, बैंक निफ्टी that is 340 agriculture, 32 manufacturing 390 पहुंच and चुका है, services, they remain resilient. Agricultural growth has been 395 supported by above normal southwest monsoon देखो अपना व्यू क्या था भाई, है ना, and better क्या kharif भाई लोग sowing. मजे आए कि नहीं आए, Higher reservoir levels with good बताओ। moisture conditions of soil augur well for the ensuing rabi crop. Manufacturing activity is gaining on the back अरे of बहुत बढ़िया, improving domestic demand, 51,000 का lower कॉल input कहाँ चल रहा है, costs, 400 और and 30, supportive government ऑलमोस्ट 100 supportive पॉइंट policy ट्रेल करते environment चलो, from मजे आने government. वाले हैं भाई, और बड़े मजे आने Q4 वाले हैं। industries output देखो सुबह से fell अपना by व्यू फिक्स था, ओनली कॉल साइड, नो 1.8% पुट in एंट्री, August on a high base. Excess 504 rainfall also ये लो भाई, dampened the अल्टीमेट production टारगेट in टच certain करने वाला है भाई, sectors such as 51,500 का भाई, electricity, coal, निफ्टी तो and टारगेट से भी cement ऊपर चल in रहा है, August. The ये लो purchasing काम managers खत्म, index, that is PMI for 574 manufacturing at 56.5 for September remained elevated. The ट्रेल services कर लेना sector भाई लोग, continues to बहुत grow बढ़िया at a टारगेट strong चला गया भाई, है pace. ना, मोर PMI देन services एक्सपेक्टेड भाई, at यहाँ पे तुमको बोला था देखो क्या होगा, 57.7 in यहाँ से September नीचे आने के बाद में यू टर्न indicates देखेंगे, robust ये टच करना expansion. चाहिए आज का भाई, On the demand 51,500 side, तुम्हारा rural काम demand हो is चुका है भाई, है trending ना, upwards while 340 urban 32 demand ऑल द वे continues कहाँ to चला hold गया भाई, है ना, firm. Government 600 consumption is लगभग improving. 300 पॉइंट। अब Investment बताओ, activity remains जब buoyant, ऐसा होता है अपने 15 with पॉइंट के होता government है भाई, है ना, capex rebounding from a contraction अभी तो मजे आगे observed होंगे in भाई the लोग, अभी first तो खुशी, quarter of this year. और निफ्टी Private ऑलमोस्ट investment 172 also टू continues to 233, gain steam on the back of expansion in non-food bank credit, higher capacity utilization, and rising investment intentions. On the external front, services नहीं भाई, exports स्किप is स्किप का कोई supporting लफड़ा नहीं था, overall आराम से गया है वो, growth. Looking आराम ahead, से रुक के गया है भाई, है ना, India's स्किप तब growth होता है जब story भाई remains विद इन ए intact मिनट ही भाई पूरा टच कर as जाए, its fundamental drivers, एंट्री देने के बाद namely में स्लो था भाई, consumption उसके and बाद में भाई investment मुंह पकड़ा है demand, फास्ट, are gaining momentum. Prospects of private consumption और प्रीमियम चैनल पे भी मिल गए होंगे तुमको दोनों ट्रेड भाई, है ना, 3 ट्रेड दिए look थे, एक bright सीटीसी on the निकलवा back दिया था of पुट वाला और improved कॉल वाले दोनों, agricultural outlook अल्टीमेट and टारगेट rural हिट। demand. Sustained buoyancy in services would also support urban demand. Government expenditure of the center and the states is expected to pick up pace in line with the budget estimates. Investment activity would benefit from consumer and business optimism. Government's री-एंट्री continued भी thrust देंगे on ना, capex चले सबसे and पहले तो बताओ भाई, है ना, healthy किस balance किसने कितना sheets कितना of पैसा बनाया है banks and सर, 100 corporates. पॉइंट बुक सर, 550 बुक, लव यू ब्रो सर, एक लॉट में एक 1160, बहुत बढ़िया सर, 10 की बुक बहुत अच्छा, 4500 बहुत बढ़िया, और कौन कौन है भाई, 2K 6297 5000 मैंने एंट्री ली भाई, क्यों नहीं ली भाई, Taking all these सुबह से एक factors ही into प्लान है अपना तो भाई, consideration, और यहाँ पे भाई निफ्टी में भी तुमको बता दिया था, यहाँ से नीचे आएगा वापस क्रॉस करेगा, अपना तो टारगेट से भी ऊपर गया है भाई, ये टारगेट पे गया है। GDP growth for 24-25 is और मैंने projected तुमको at एक और कॉल बताई थी, अगर आपको बताओ तो 7.2%, 51,500 में भी भाई प्लान कर with सकते हो, मैंने बोला था ओटीएम Q2 के अंदर at भी, 7%, और वो ऑल द वे पता कहाँ से कहाँ Q3 गई है, at वो डबल हो चुकी है वहां से। 7.4% and Q4 7.4%. Real GDP growth for Q1 of सर next 2K financial बुक year, 43 that is बुक, मोटा प्रॉफिट बनना चाहिए यार, ये तो 25-26, भाई is projected at 23 के बुक 23 7.3%. लाख, ओह बहुत The बढ़िया, risks are 98,000 evenly balanced. I would now 3300 like to 10,000 turn to 3700, inflation. ये Now, कोई as मजा है भाई, है ना anticipated, सर, headline वाइफ का कॉल आ गया था, inflation मिस softened significantly in July and August, with base effect playing a major role in the month अरे of यार July. ये गलत टाइम पे कॉल आ गया भाई लोग, Degree of correction during these 2 months. Considerable divergence, however, was observed within the food subgroups. Now, whatever I am saying, I have given lot of data in the footnote of my statement. रुको which भाई, as ये usual पुल बैक के will be बाद में भी अगर uploaded in the कंटिन्यूटी में RBI जाता है ना तो website.
साइड में ही प्लान करने वाले हैं। हालांकि हमारा अल्टीमेट टारगेट टच कर गया है ये भैया ना, यही टारगेट था, और इसके ऊपर भी अगर ये निकलेगा ना यहाँ पे इसको रुकने के बाद में, तो और फर्दर 640 वगैरह ये बैंक निफ्टी जा सकता है। दिस इज बैक्ड अप बाय द डेटा व्हिच आई हैव गिवन इन द footnotes, and in fact all the statements that I am making are backed up by supportive data there in the footnotes, so those of you who are interested may like to have a look at not ready to stop. Now deflation 630 की तरफ वापस बढ़ने की कोशिश कर रहा है। Electricity and LPG prices, core inflation on the other hand, ये कैंडल के बाद में फॉलोअप कैंडल में 640 वाले लेवल आते हुए दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में, अल्टीमेट टारगेट के भी ऊपर वाला टारगेट, ड्यू टू अनफेवरेबल बेस इफेक्ट्स एंड पिकअप इन फूड प्राइस मोमेंटम, एंड दिस वुड बी कॉज्ड बाय द लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ अ शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ऑफ ऑनियन, पोटैटो एंड चना दाल, दैट इज ग्राम, in 2023-24 among other factors. The headline inflation trajectory, however, is projected to sequentially moderate in Q4 of the current financial year due to good kharif harvest. 51,000 और भाई है ना 500 की जो कॉल है ना, likely good crop. भाई सीधा पहुंच रही है भाई, टारगेट पे पहुंचने वाली है भाई, और ऊपर वाले टारगेट पे, और बड़ा मजा आ चुका है भाई तुमको यहाँ तक। री एंट्री वालों को लेवल नहीं मिल रहा है बस भाई है ना। International crude prices have become volatile. 600 पहुंच गई है भाई है ना, 30-40 पॉइंट और बच रहे हैं, और इसके फर्दर अपसाइड जाएगी ना। एक री एंट्री कर लेना चाहता हूँ भाई है ना, स्कैल्प जिनको करना है ना, इस कैंडल के ऊपर भाई है ना 51,300 वगैरह का कॉल है ना, 416 के हाई के ऊपर जाएगा ना। Organization and the World Bank price indices for September, if sustained, can add to the upside risks to CPI inflation. Taking into account all these factors, CPI inflation for 2024-25, that is for the current year, is projected at 4.5%, with Q2 at 4.1%. GDP का अनुमान भी बढ़ा दिया है, अप साइड में और जाने वाला है। जो भाई है ना 416 वगैरह ये क्रॉस किया ना, इसके ऊपर भाई है ना अभी चल रहा है देखो 392 वगैरह, इसके ऊपर क्रॉस करने पे ना ये 640 वगैरह पे देखो यहाँ पे इस जगह से सेलिंग आई थी, तो ये सारे लेवल भाई ये टच कर जाना चाहिए। और यहाँ पे जो भाई जितने लोग होंगे ना उनका एसएल काटेगा ना, तो यहाँ पे 640 वगैरह तोड़ के भी है ना एक बढ़िया 40-50 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिलने को देखने को मिलेगा। 51,300 का जो कॉल है ना, 51,300 तो महंगा हो जाएगा, 51,500 बात कर रहे थे पुनः ना, देखो 51,500 का कॉल, 300 का हाई मारा हुआ उसने, 300 और हाँ 300 का, तो 51,500 का कॉल है ना, ये तो 343 टू 600 प्लस चला गया भाई, ये तो डबल हो चुके हैं भाई यहाँ पे। तो अभी री एंट्री वालों पे ध्यान दे रहे हैं, अगर 51,500 का कॉल 300 के ऊपर निकलेगा ना, तो और फर्दर यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होंगे ना उनको हिट करके भाई है ना अपसाइड के लिए जाने की कोशिश करेगा। पुल बैक भी अच्छा दिख रहा है अभी, These factors could lead to an easing of food inflation. Pullback अच्छा है, 500 का लेवल को रीटच भी कर रहा है। Is subject to weather-related shocks, if any. Core inflation is likely to remain broadly contained on continuing transmission of past monetary policy actions. 51,000 कॉल ने हाई क्या मारा है भाई तुम्हारे ने? Surprises in global commodity prices. Almost 650. And almost double हो गया है भाई ये वाला। Balance. Please mark my words. The prevailing सर ट्रैप बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा ट्रैप भाई, ऊपर की तरफ नहीं बनेगा। तुम भाई ध्यान दो ऊपर की तरफ का जो एंट्री होगी ना उस पे 51,500 कॉल भाई, ये ऐसा ट्रैप में तुम भी बैठ जाओ भाई, 300 पॉइंट ले लो उसमें है ना। कौन है ट्रैप वाला बंदा? तुम फर्दर अपसाइड के लिए ही फोकस करना। 51,500 का जो कॉल है ना वो 300 के ऊपर देखने वाला है। The very recent increase in certain commodity prices continue to stare at us. The adverse impact of these risks cannot be undermined, cannot be underestimated. It's with a lot of effort that the inflation horse has been brought to the stable.
that is closer to the target within the tolerance band compared to its highest or heightened levels 2 years ago. We have to be very careful about opening the gate, as the horse may simply bolt again. We must keep the horse in tight leash so that we do not lose control. Going forward, we need to closely monitor the evolving conditions for further confirmation of the disinflationary impulses. I would now like to turn to the liquidity and financial market conditions. System liquidity remained in surplus during August and September, and also in early October, with a pickup in government spending and decline in currency in circulation. Liquidity conditions, however, had turned into deficit for a brief period during the latter half of September, with the buildup of government cash balances on account of tax-related outflows. In sync with the shifting liquidity conditions, the Reserve Bank proactively conducted two-way operations to ensure alignment of एक सस्ता वाला प्रीमियम बताता हूँ भाई, इससे भी 51,500 का कॉल है ना ये अपन प्लान करेंगे 240 के ऊपर, एक रिस्की वाला स्कैल्प. Treasury bills, that is T-bills, and commercial papers issued by non-banking financial companies, that is NBFCs, ये हटा देता हूँ भैया ना, while that on certificates of deposits firmed up marginally. The 10-year G-Sec yield softened in August-September on global and domestic. अभी आज तो मजा आ गया ना भाई लोग. Policy pivot in the United States. बात कर रहे थे कल कि यार देखो दिन अच्छा नहीं जा रहा, तो देखो दिन अच्छा चला जाता है यार, है ना. And also सही टाइम का वेट करना चाहिए. Only factors, but the yields in August-September, I'm talking about the 10-year G-Sec yields, they softened somewhat in August and September due to multiple factors, which would include pivot in the monetary policy of the US and some major economies, improved global investor sentiment, benign domestic inflation, and accelerated fiscal consolidation. The term premium, that is 10-year G-Sec yield minus 3-month T-bills yield, has remained stable in the recent few months. Transmission to the credit market has been satisfactory. Moving forward, the Reserve Bank will continue to be nimble and flexible in its liquidity management operations. We will deploy an appropriate mix of instruments to modulate both frictional and durable liquidity. अभी next planning 51,500 का, ठीक है? Money market interest rates evolve in an orderly manner. During the current financial year, that is up to 8th of October, that is till yesterday, the exchange rate of the Indian rupee has remained largely range-bound. The Indian rupee also continued to be the least volatile among peer EME currencies. This was so even during the high volatile episode following the unwinding of the yen carry trade in early August this year. The lower volatility of the Indian rupee reflects India's strong macroeconomic fundamentals and improved external sector outlook. I would now turn to financial stability. The health parameters of banks and NBFCs in India continue to be strong. There has been some recent commentary on the likelihood of stress buildup in a few unsecured loan segments like loans for consumption purposes, microfinance loans, and credit card outstanding. सब ठीक है, बट कभी-कभी आप बिना सोचे समझे मेरी एंट्री करवा देते हो. 416 वाली फालतू की एंट्री. Measures as may be considered necessary. 416 वाली